ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ YouTube ਚੈਨਲ ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ PSEB ਕਲਾਸ 12th ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, 80 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। तो सब तो पहला है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो ब्रेन ड्रेन वाला जो पैरा है वो हैगा इत्थे, ते तुसीं इस पैरे नूं वीडियो नूं पॉज करके पढ़ सकते हो। फिर असी क्वेश्चन आंसर्स करांगे। तो आओ हुण असी करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। सब तो पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द टर्म ब्रेन ड्रेन इज ऑल्सो रेफर्ड एज ऑप्शन सन कैपिटल फ्लाइट, ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट, पुल फैक्टर्स या पुश फैक्टर्स। तो इसका उत्तर है ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट। सैकेंड क्वेश्चन है ब्रेन ड्रेन हैज़ टेरिबल कॉन्सिक्वेंसिज ऑन द इकनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफ ऑप्शन सन सेंडिंग कंट्रीज, रिसीविंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो इसका उत्तर है सेंडिंग कंट्रीज। अगला क्वेश्चन है विच टर्म रेफर्स टू एज ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट, ऑप्शन सन ब्रेन ड्रेन, कॉन्फ्लिक्ट्स, पुल फैक्टर्स या पुश फैक्टर्स। तो इसका उत्तर है ब्रेन ड्रेन। इस तो बाद है फोर्थ क्वेश्चन, पुश फैक्टर्स इंक्लूड ऑप्शन सन लो वेजेस, लैक ऑफ सैटिस्फैक्टरी वर्किंग कंडीशंस, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर है बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है पुल फैक्टर्स इंक्लूड ऑप्शन सन इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, कैपिटल फ्लाइट, सेंडिंग कंट्रीज या नन। तो इसका उत्तर है इंटेलेक्चुअल फ्रीडम। अगला क्वेश्चन है ब्रेन ड्रेन हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन ऑप्शन सन सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, लाइफस्टाइल या वेल्थ क्रिएशन। तो इसका उत्तर है इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7, वट डू यू मीन बाय द टर्म ब्रेन ड्रेन। तो इसके उत्तर विच असीं लिख सकते हैं इट इज़ अ नेम given to the activity of skilled people of a country migrating to a foreign country for better prospects. अगला क्वेश्चन है enumerate the push factors that lead to brain drain। तो इस विच असीं लिख सकते हैं low wages and lack of satisfactory working and living conditions। तो इस तो बाद fill in the blank with suitable word from the passage every citizen must dash for the development of the nation wholeheartedly। तो इत्थे असीं भरना है contribute। तो इस तो बाद है who are taking their investments abroad, एंटरप्रेन्योर्स। तो इस तो बाद दूजा पैरा हैल्थ एंड हाइजीन नाल संबंधित है। तो इस पैरे नूं तुसीं पढ़ सकते हो वीडियो नूं पॉज करके। तो इस तो बाद असीं क्वेश्चन आंसर्स नूं स्टार्ट करांगे। तो आओ हुण असीं शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। हाइजीन रेफर्स टू प्रैक्टिसेस दैट लीड टू गुड हेल्थ थ्रू ऑप्शन सन बैलेंस्ड डाइट, इंप्योर एयर, एबंडेंट वेल्थ या रेगुलर प्ले। तो इसका उत्तर है बैलेंस्ड डाइट। सेकंड क्वेश्चन, लाइफ विल बिकम वर्थलेस थ्रू ऑप्शन सन गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग, रेगुलेटेड लाइफ, प्योर माइंड या हेल्दी बॉडी। तो इसका उत्तर है गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म हेल्थ रेफर टू। तो इसका उत्तर है इट रेफर्स टू स्टेट ऑफ साउंड माइंड एंड फिजिकली फिट बॉडी फ्री फ्रॉम एनी सिकनेस और डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन है कैन अ वेल्दी बट अनहेल्दी मैन एंजॉय लाइफ, नो। इस तो बाद है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द पैसेज द सिलेक्शन इन आर्मी इज मेड प्योरली ऑन हेल्थ। तो इस तो बाद मैच द कॉलम। तो इस विच असीं एंटोनिम्स नूं मैच करना, ओपोजिट अर्थ ओपोजिट्स नूं मैच करना। फ्रैश द ओपोजिट हो गया स्टेल, तो प्रिजर्व द ओपोजिट हो गया डिस्ट्रॉय। तो इस तो बाद जिहड़ा क्वेश्चन प्रैसी लिखनी है, तो प्रैसी तुसीं अपने शब्दों में लिख सकते हो। तो इस गल का ध्यान रखना कि वर्ड लिमिट नूं एक्सीड नहीं करना, क्योंकि प्रैसी विच की हुंदा है कि स्टूडेंट्स वर्ड लिमिट नूं एक्सीड कर दिंदे हन। तो 1/3 एक तिहाई शब्दों में तुसीं लिखना है। तो इस गल का तुसीं ध्यान रखना। तो इस तो बाद है लैटर। Imagine you are Himalaya, write a letter to Deputy Commissioner of your district making out a case for the opening of a dispensary in your area। तो लैटर आप सारे की स्क्रीन के सामने लिखी हुई आ रही है। तो आप सारे विद्यार्थी इस लैटर में चंगी तरह पढ़ सकते हो, तो देख सकते हो भी किस तरह से लैटर लिखनी है, किहड़ा फॉर्मेट असी फॉलो करना है। तो इस तरह तुसी अपने वालों लैटर लिख सकते हो। तो जे पॉज करके पढ़नी है लैटर, तो पॉज करके लैटर नूं भी तुसी पढ़ सकते हो। तो इस तो बाद एप्लीकेशन, तो वो भी असी सॉल्व करके तुहाडे स्क्रीन के सामने रखी हुई है। तो तुसी इस एप्लीकेशन नूं भी चंगी तरह पढ़ सकते हो वीडियो नूं पॉज करके। तो तुसी एप्लीकेशन नूं पढ़ो, तो फिर असी अगला क्वेश्चन है वो करांगे। इस तो बाद न्यूज़पेपर हैडलाइन पैनल टू फ्रेम डीजल रूल फॉर ट्रैक्टर्स। तो इस विच असी लिख सकते हैं द ऑयल मिनिस्ट्री हैज सैट अप हाई लैवल पैनल टू फ्रेम fuel economy rules for tractors to moderate their diesel consumption। It constitutes almost 7.7% of India's annual diesel use। तो इस तरह तुसीं न्यूज़पेपर हैडलाइन अपने वालों फ्रेम करके लिख सकते हो। तो दूजा
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਐਨ ਈਮੇਲ ਟੂ ਯਰ ਨਿਊ ਇੰਪਲਾਇਰ ਥੈਂਕਿੰਗ ਫॉर द ਇੰਟਰਵਿਊ। ਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋਟ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕਨਵਿੰਸ ਹਰ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਹੈਡ ਨੋਟ ਬੀਨ ਈਟਿੰਗ ਸਿੰਸ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਉਸਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਬੇ ਯੋਰ ਟੀਚਰ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇਜ਼ ਮਨਜੀਤ ਓਨੈਸਟ। ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਓਬੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ। ਉਸਨੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਹੈ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੇਕਨ ਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਭਰਨੇ ਹਨ, ਡੂ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਿਡ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪਸ ਸਮ ਮਨੀ ਇਨ ਵਾਲਟ ਫॉर ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼। ਆਈ ਗੈਟ ਅਪ अर्ਲੀ ਇਨ ਦ ਮੋਰਨਿੰਗ। ਆਈ ਕਵਰਡ ਮਾਈ ਫੇਸ ਐਂਡ ਵੈਪਟ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੂ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਿਡ ਜੈਰੈਂਡ, ਹੀ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਬਾਊਟ ਸਿੰਗਿੰਗ। ਤੇ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ, ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਲਰਨ ਨਿਊ ਥਿੰਗਸ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਰਾਈਟ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਫਟਰ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਟੂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਹੈਪੀ ਟੂ ਟੈਲ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਹੈਪੀ ਡੈਟ ਹੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟੈਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। बुलेट ट्रेन्स रन फास्टर दैन मेल ट्रेन्स, इसका हो जाएगा मेल ट्रेन्स डू नॉट रन एज फास्ट एज द बुलेट ट्रेन्स। इस तो बाद वॉइस चेंज करनी, अर्जुन सीज अ डियर इज सीन बाय अर्जुन। हैड यू टेकन टी, हैड टी बीन टेकन बाय यू। इस तो बाद चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी शैल वी एवर मीट अगेन, ही वंडर्ड इफ वी वुड एवर मीट अगेन। तो यह तो हो गया ग्रामर पार्ट। होना लिटरेचर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू हसन हू वर नर्ड्स, तो इसका उत्तर है अकॉर्डिंग टू हसन हार्ड वर्कर्स वर नर्ड्स। तो अगला क्वेश्चन है नेम द राइटर ऑफ द चैप्टर द मार्च किंग, कैथरीन लिटल बेकलेस। तो इस तो बाद द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी इज टू एक्नॉलेज अ सर्विस, ट्रू और फॉल्स। से ट्रू है। तो लूसिया वॉज सफरिंग फ्रॉम, तो इसका उत्तर है ट्यूबरक्लोसिस। वट वॉज डॉक्टर बर्नर्ड्स फादर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, ही बिलीव दैट गॉड टेस्ट मैन थ्रू सफरिंग। हु वॉज द हेड गर्ल ऑफ द मिस बीम्स स्कूल, सीता, मिली, लूसिया या बारबी। तो इसका उत्तर है मिली। हु वॉज जनरल कुक, ट्रूकिन, ओचोमेलो, प्रोहर या जिगलो। तो इसका उत्तर है प्रोहर। डैश इज द राइटर ऑफ द गोल्ड फ्रेम, आर के लक्ष्मण। कला खान वॉज अ डेंटिस्ट, ट्रू। वेयर वर करम सिंह एंड मान सिंह पोस्टेड, दे वर पोस्टेड एट द बर्मा फ्रंट। तो इस तो बाद है स्टैंजास फॉर कॉम्प्रीहेंशन। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth, then took the other as just as fair and having perhaps the better claim. The question and name the poem and the poet. The poem The Road Not Taken, poet Robert Frost. What is the rhyme scheme of the first 4 lines in the given stanza? The would, both, stood, could। ਇਹ ਵਾਲੇ words ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਹਨ। तो इतने जी राइमिंग स्कीम मिल रही है वो है ए बी ए। इस तो बाद वट इज़ द पोइट सॉरी अबाउट, ही सॉरी डैट ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ रोड्स। इस तो बाद वट इज़ द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ 2 डिफरेंट पाथ्स इन द वुड्स। तो इसका उत्तर है द वन पाथ इज़ फॉर द ऑर्डिनरी पीपल, द अदर लेस ट्रेवल्ड पाथ इज़ फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। तो इस तो बाद आई एम द बीम डैट होल्ड्स योर हाउस, द बोर्ड ऑफ योर टेबल, द बेड ऑन विच यू लाई, एंड द टिम्बर डैट बिल्ट योर बोट। I am the handle of the hoe, the door of your homestead, the wood of your cradle, and the shell of your coffin. Name the poem and the poet. This is the उत्तर. The poem is Prayer of the Woods and the poet is not known or anonymous. तो इस तो बाद है write down the line in the poem that explains the wood accompanies us from birth to death. तो ये वाली लाइन तो सानू पता लगता है। I am the handle of your hoe, the door of your homestead, the wood of your cradle, and the shell of your coffin. तो wood of your cradle means कि बच्चे का पंगूड़ा। तो accompanies us from birth, ਤੇ the shell of your coffin accompanies us till death। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ who is the speaker in the poem, the wood or the tree। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ what is the prayer of the woods to the human beings, the woods pray to human beings not to harm them। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ central idea of the poem on friendship। The poem is written by Khalil Gibran. He tells us about friendship by praising its virtues and advantages. A friend is a God's gift. He stands by us through thick and thin. He can read our thoughts even if we do not express them. Joys become double and sorrows half when shared with a friend. Just about on his blindness. The poem is written by John Milton. In this poem, the poet feels restless, who thinks that being blind, he will not be able to make proper use of his talent given to him by God. But soon he realizes that God is very kind to his creatures. God does not want any return for the gifts he had given to human beings. God does not want men to work to please him. Those who accept
Gods will cheerfully are his best servants. This was answer the following questions in 20 to 30 words. Why did the narrator render attendance to Hassan every time? There's the answer. Hassan would beg for attendance in such a manner that the narrator could not say no. She did not want that attendance shortage should affect his appearance in the final examination. So, how did Philip manage to get a clean dress? His music teacher's wife, Mrs. Esputa, gave him a white shirt. This shirt was large and she fitted it with the help of pins. Isabada described the glow of pleasure that the narrator experienced. The bus conductor behaved in a very courteous manner even though the narrator had no money to pay for the bus fare. This was a glow of pleasure that the narrator experienced. Isabada, what did the narrator learn at the well house? At the well house, as a cool stream of water gushed over the narrator's hand and Sullivan spelled into the other word water, the narrator felt that the mystery of language was revealed to her. The living word awakened her soul, gave it light, hope, and joy. So, how were the convicts punished when they failed to work properly? Gadri Baba in Kalda Pani jail is chapter which one? If the prisoners failed to extract 30 pounds of coconut oil each and pound coconut husk to produce cord thread, they were made to face filthy abuse and were given up to 30 whiplashes. Is the answer any two? How was Hawkins' bleeding finger a flag of victory? Hawkins' bleeding finger was a flag of victory because he hoped to get some damages through the police. तेज तो बाद है व्हाट वाज द कस्टमर्स कंप्लेंट रिगार्डिंग द फ्रेम तेज के उत्तर विच असी लिख सकते हैं द कस्टमर कंप्लेंट दैट दत्ता हैड गिवन हिम अ स्क्वेयर फ्रेम इंस्टेड ऑफ द कट माउंट विद एन ओवल शेप तेज तो बाद है व्हाई डिड द नरेटर कंसिडर चंदू द एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन फॉर हिम द बार्बर्स ट्रेड यूनियन तेज द आंसर है he considered Chandu as the embodiment of perfection because he could make and fly paper kites of complicated designs which the narrator could not do. This is about the long questions. Character sketch of Hassan. Both important है. Hassan was a college student. He was a bright student but was very irregular in studies. He was hardly ever present in the class and was always short of attendance. He used to laugh at hardworking students and call them nerds. He would spend all his night listening to music and chatting with friends. When he grew up, nobody liked him in the office because of his bad behavior. He finally became a salesman of a computer software. The narrator encouraged him to work hard in life and he promised to follow her advice. So, Bada, write the theme of the chapter 2 Gentlemen of Verona. The chapter 2 Gentlemen of Verona is based on the theme that we should face the misfortune of life boldly. The message is conveyed through the life struggle of two brothers, Nicola and Jacopo. They became homeless and orphans in their childhood and their sister Lucia was suffering from tuberculosis of the spine. Yet they were hopeful towards life. They sold fruits and hawked newspapers. They worked hard for the treatment of their sister. The story conveys a message that sacrifice, sincerity, and devotion add new dignity to life and give a new hope to humanity. Is the character sketch of police teacher. Police teacher was a kind lady. She was very sympathetic with Polly and showed her great love and affection. When Polly could not tell her name and cried, she spoke to Polly in a very soothing voice and encouraged her to tell her name again. She encouraged Polly to come to school every day. She gave new hope and new life to Polly. She helped Polly to build her self-esteem. When Polly refused to marry Bishambar, she supported her decision of remaining single and becoming a teacher in her own school. She is an example of an ideal teacher. So, that Datta found a solution of his problem. Did it really work for him? Justify your answer. The framed photograph of the customer's grandfather was to be delivered in the next 3 days. Datta had ruined it by dropping the paint over it and rubbing it. He decided to replace the photograph with that of a similar looking man. When the customer saw the photograph, he said to Datta, "What have you done?" Datta feared that his trick had been discovered, but the customer said that he asked for a cut mount frame with an oval shape, but it was a square one. He took the frame and went away. So Datta's solution to the problem of the spoiled photograph worked well. तो इस तो बाद है 5 मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग ते आप सारे ने पेपर है सुंदर लिखाई विच लिखना है